Hey guys, this is Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here I am going to teach you a short story about honesty is the best policy. ईमानदारी सर्वोत्तम गुण है. This is the story about a milkman who was very dishonest and he used to mix water in the milk to sell the milk in the city. And this was almost to be a crime and he was doing such works and finally through the God's sake he was punished for his deeds. So we will learn this in this story. But before that, let me tell you what is the importance of learning stories. You know it very well that if you are trying to speak something, if there is something in your mind and if you are trying to speak that in English, then you can do some great thing in your life by doing such practices. So please come to me and learn a story with me. So the story is starting from here. This is the story about honesty is the best policy. ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है. A milkman became very wealthy. एक दूध धारा या दूध वाला बहुत ही धनी हो गया. Through dishonest means, बेईमानी के तरीके से. Means मतलब के साधन से या के तरीके से. Through मतलब के माध्यम से. He had to cross a river. उसे एक नदी पार करनी पड़ती थी. डेली मतलब प्रतिदिन. To reach the city, शहर पहुंचने के लिए. वेयर जहां हिज कस्टमर्स लिव, जहां उसके ग्राहक रहा करते थे. ही मिक्स द वाटर ऑफ द रिवर, वो नदी का पानी मिला दिया करता था. जनरसली मतलब ईमानदारी पूर्वक कह सकते हैं. जनरसली का अर्थ शुद्ध होता है क्या? जनरस मीन्स होता है उदार, या इसका कर सकते हैं उदारता पूर्वक. ठीक है, तो उदारता पूर्वक मिला देता था पानी. किसमें? दूध में. विद द मिल्क, दूध के साथ पानी मिला देता था. दैट ही सोल्ड फॉर अ गुड प्रॉफिट, जिसे वो बेचा करता था एक अच्छे लाभ के लिए. ठीक है, गुड प्रॉफिट मतलब अच्छे लाभ के लिए. वन डे, एक दिन. ही वेंट अराउंड, वह एक दिन गया. कहाँ गया? कलेक्टिंग द ड्यूज मतलब जो बकाया राशि होती है उसको कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए. इन ऑर्डर टू, इसलिए इन ऑर्डर टू मतलब किस लिए किया था? टू सेलिब्रेट द वेडिंग ऑफ हिज सन, अपने लड़के की शादी को सेलिब्रेट मतलब मनाने के लिए. विद द लार्ज अमाउंट दस कलेक्टेड, विद द लार्ज अमाउंट, इस तरीके से बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे इकट्ठा हो गए. कलेक्टेड उसको इकट्ठा करके उसने क्या किया? ही परचेज प्लेंटी ऑफ रिच, उसने खरीदे बहुत ज्यादा मात्रा में. प्लेंटी ऑफ रिच मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में धनी वाले कपड़े, अर्थात कास्टली गुड्स, क्लॉथ, अर्थात जो कास्टली थे, जो कीमती थे, उन कपड़ों को खरीदा. एंड ग्लिटरिंग गोल्ड, ग्लिटरिंग गोल्ड्स का शुद्ध अर्थ क्या होता है? चमकते हुए सोने के ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषणों को भी वो क्या किया? खरीदा. बट व्हाइल क्रॉसिंग द रिवर, लेकिन नदी पार करते हुए द बोट कैप्साइज्ड, कैप्साइज्ड मतलब पलट गई, नाव पलट गई. ऑल हिज कॉस्टली परचेजेस, उसके सभी कीमती खरीदी हुई चीजें वर स्वैलोव्ड, निगल ली गई. बाय द रिवर, नदी के द्वारा, अर्थात नदी में समा गई. फिर क्या हुआ? द मिल्क वेंडर वॉज स्पीचलेस, जो मिल्क वेंडर था, वेंडर मीन्स होता है विक्रेता, और मिल्क मतलब दूध, दूध का विक्रेता था. वॉज स्पीचलेस, निरुत्तर था, अर्थात कुछ बोल नहीं पा रहा था. विद ग्रीफ, दुख के साथ. ठीक है. एट दैट टाइम, उसी वक्त क्या हुआ? ही हर्ड अ वॉइस, उसने एक आवाज सुनी. दैट केम फ्रॉम द रिवर, जो नदी से आई थी. डोंट वीप, रो मत. व्हाट यू हैव लॉस्ट, जो तुमने खोया है. इज ओनली, वह केवल है क्या? द इलिसिट गेन्स, इलिसिट मतलब नाजायज या गलत तरीके से, गेन्स मतलब लाभ प्राप्त हैं, उसको तुमने खोया है. विच यू अर्न थ्रो चीटिंग, जिसको तुमने कमाया था कैसे? थ्रो चीटिंग, चीटिंग मतलब क्या? धोखा दे करके. योर कस्टमर्स, किनको? अपने ग्राहकों को. ठीक है. तो इन दिस वे स्टोरी इज कंप्लीटेड. लेट अस स्टडी अबाउट द मोरल ऑफ द स्टोरी. द मोरल ऑफ द स्टोरी इज हियर. ऑनेस्ट डीलिंग्स आर ऑलवेज सुप्रीम, जो ऑनेस्ट डीलिंग ईमानदारी के कार्य होते हैं, डीलिंग मतलब कार्य, आर ऑलवेज सुप्रीम, वो सदैव ही
अच्छे होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं। मनी अर्न बाय रॉन्ग मेथड्स, गलत तरीके से कमाए हुए धन, विल नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, क्या, लेट अस सी व्हाट इज रिटन बिलो। ओके, कभी नहीं, रिमेन फॉरएवर, कभी नहीं रहते हैं फॉरएवर, सदैव के लिए। सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड द स्टोरी, एंड वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू दिस स्टोरी to you without using Hindi words. Let us study this story once again in my own words. This is the story about a milkman who was very dishonest because he was selling his milk in where, in the cities. To reach that city, he used to cross the river, and when he was crossing the river, he used to mix water in the milk. So that milk he was selling to the customers, and he became very wealthy. And after becoming very wealthy, he was living a very luxurious life. But before that, let me tell you, when he was living very luxurious life, by doing that, one day he will be punished for that things, because after some days, when he was going to collect the money whatever he was getting from his customers after paying the milk. One day when he was going there, he collected so much money, because through that money he was going to the market to buy costly things for his son's wedding. So that was the occasion of his son's wedding, which was going to be celebrated by him for with that money. When he was collected that money, that was so much amount, and with that money he bought some costly goods and some glittering gold ornaments. And when he was returning through that river by boat, in the way the boat was capsized, and all the ornament and all the clothes, costly clothes, was swallowed into the river. So he became very sad just because of that. But a sound from the river came out, and which told him that whatever you lost, that was not yours gain, because you earn those all things just because of this your dishonesty, and just because of mixing water of this river in that milk. So you did very bad things, and this is the result of your bad things. So whatever happened with you, don't feel grief, and just whatever you did, just that is the result of that. So don't worry what happened, that was your own doings. So finally we came out to know that that person, that milkman, was punished by the grace of God. And finally, whatever come the outcome of this story is, that is the moral of this story. If you are living a very honest life, that is the great and that is the supreme, and whatever you earn by dishonesty, that will never remain with you forever. So in this way I have completed the story. Speak such stories in front of your brothers, sisters, and teachers, and whatever the people are in your contact. Speak such story in front of them, and one day would come when you will be able to speak English language very well, because what is happening in front of you, you will be able to describe very easily, because this is the very simple way to learn how to speak English language. So with these all words, I am going to end my videos. Please like, share and subscribe my videos, and do comment. Thank you very much.